welcome to class. So in this class we are going to talk about the new evaluation format that has been changed in this session, that is for the year 2021 onwards. So we'll have a detailed introduction of the distribution of marks for the English paper. So the English paper comprises of total 100 marks. Okay, so these 100 marks are divided into two parts, that is 80 and 20. 80 marks are for the written exam and 20 marks are for the orals. These 80 marks are for the written, as I told you, and you have to solve the written exam paper in just 3 hours. Okay, and the 20 marks that are for the orals are given by the college. The orals are conducted by the college itself. So what you need to learn in orals is reading, listening and speaking. For the oral, we'll have a detailed introduction later on. So coming on the written part, so the written 80 marks paper is for 3 hours and the question paper consists of 4 sections. Section 1, that is the prose. Section 2, that is poetry. Section 3, the writing skills, and section 4, genre drama. Genre drama is newly introduced and it is a sort of rapid reading. So your English paper is a total 100 marks paper in which 80 are for the written and 20 are for the oral exams. So students, now we'll move on to the detailed introduction of the question paper pattern section wise. So the first section of your question paper will be the prose section. The prose section consists of comprehension, language study, summary, note making and mind mapping. So अब आपको comprehension में क्या आता है? In comprehension आपको एक passage दिया जाता है and from that passage some activities are given. आपको passage पढ़ के वो activities को passage में से solve करना होता है. Then comes language study. Language study comprises of non-textual grammar. Non-textual grammar means which is not in the text which is given to you above, but it is in your textbook and you have studied it since you were in the primary school. Okay, so next come summary writing. Then summary writing मतलब क्या होता है? आपको 2 से 3 पैराग्राफ्स दिए होते हैं और उसमें से आपको उन पैराग्राफ्स का जिस्ट निकालना होता है. वो पैराग्राफ्स या तो किसी पर्सनालिटी के बारे में होते हैं या किसी प्लेस के बारे में होते हैं. आपको उसमें का जिस्ट निकाल के वो 2 से 3 पैराग्राफ को शॉर्टन करके एटलीस्ट 120 to 150 वर्ड्स में प्रेजेंट करना होता है. देन कम्स नोट मेकिंग. नोट मेकिंग में भी आपको कंप्लीशन एक्टिविटी होती है. आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और नीचे या तो टैबुलर फॉर्म या तो वेब दिया होता है जिसको आपको पैराग्राफ के रेफरेंस से फिल करना होता है. नेक्स्ट कम्स माइंड मैपिंग. This is newly introduced in the syllabus. Mind mapping. Now mind mapping मतलब क्या होता है? जैसे आपके माइंड में आप कैसे मैप बनाते हैं आपको वो बताना है. फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है How will you achieve success? You need to prepare a mind map. So आपको सक्सेस पाने के लिए आप क्या करेंगे उसका माइंड मैप बनाना है. So you will have to draw and mention everything what requires to get success. Okay, so all these we are going to go into deep detail later on. So coming into section 1, that is prose. That is, we are going to first talk about question number 1A. Okay, so question number 1A. Question number 1 has 2 sub questions A and B. So first we are going to talk about question number 1A. Okay, so in question number 1A, what is there? Total आपके सिलेबस में 8 लेसन्स है. ओके, एज यू हैव गॉन थ्रू आपके टेक्स्ट बुक में 8 लेसन्स है. उसमें से 8 लेसन्स में से कोई भी आपको एक लेसन आएगा. ओनली 1 लेसन इज गोइंग टू कम और उस 1 लेसन में से आपको कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आएगा. दिस एक्सट्रैक्ट इज गोइंग टू बी ऑफ अबाउट 275 to 300 वर्ड्स. ओके, अब आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो 275 से 300 वर्ड्स का है. अब इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे. अब क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल 6 क्वेश्चंस विल बी देयर दैट आर फ्रॉम A1 to A6.
अब ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं? ये क्वेश्चंस जो है 2 marks each carries 2 marks. Okay, so 6 questions are there from A1 to A6 and each question carries 2 marks. So the total marks distribution for question number 1A is 12 marks. Okay, so from 8 lessons आपको कोई भी एक लेसन आने वाला है और उन 8 लेसन्स में से आपको एक एक्सट्रैक्ट आने वाला है जो 275 से 300 वर्ड्स का होगा. उस पे बेस्ड 6 एक्टिविटीज आएंगी A1 से लेके A6. वो सारी 6 एक्टिविटीज जो है 2-2 मार्क्स की होंगी और ऐसा करके आपका जो क्वेश्चन नंबर 1A है वो टोटल 12 मार्क्स का होता है. So students, now we are going to talk about the question wise marks distribution and the types of question which are asked in question number 1A. We are talking about question number 1A. So question number 1A क्या है? Read the extract and complete the activities and that carries total 12 marks. और इसमें 6 एक्टिविटीज होती है A1 से लेके A6 तक जो 2-2 मार्क्स की होती है. अब इसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है of about 275 to 300 words. Based on that extract, 6 activities are given and what type of activities are there we are going to discuss. The first is A1. A1 is simple factual. Simple factual मतलब जो सिंपल फैक्ट्स हैं आपके फैक्ट है आपके पैसेज में आपको दिए हुए उसका आंसर आपको डायरेक्टली मतलब पैसेज से मिल जाएगा. वो सिंपल फैक्ट्स पैसेज के सिंपल फैक्ट्स से रिलेटेड है. आपको वो आंसर डायरेक्टली आपके पैसेज में नजर आएगा. तो दिस कैरीज 2 marks. दैट इज सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी. नेक्स्ट इज A2. A2 is complex factual. As you can see, it is complex factual. Okay, ये भी जो है एक्सट्रैक्ट के फैक्ट्स पे ही बेस्ड है लेकिन इसका आंसर जो है आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है. द आंसर इज इनडायरेक्टली गिवन इन द पैसेज. ओके, सो फॉर दिस यू नीड टू रीड द होल पैसेज एंड देन यू हैव टू इंटरप्रेट द आंसर. दैट ऑल्सो कैरीज 2 marks. एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट सारे इसमें जो क्वेश्चन है A1 से लेके A6 तक ये हमें फेमिलियर है लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है इनमें से जो हमें फेमिलियर नहीं है और वो है क्वेश्चन नंबर A3. A3 हमें फेमिलियर क्यों नहीं है अब हम ये देखते हैं. A3 जो है इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है पैसेज में का और आपको उसको इंटरप्रेट करना है अपने वर्ड्स में. तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना होता है. अब you have to critically analyze the sentence. What the author wants to say, you need to explain that. Okay, you need to interpret from the text, that is contextually explain what the author wants to say. In this you have to elaborate and explain for 2 marks. Okay, so this is not familiar for us, that is we have not seen such type of questions till now. Next question is A4, that is personal response. Personal response is the most easiest question of the paper. Okay, so personal response में आपको अपना खुद का ओपिनियन दिखना है. आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और उस पे आपको अपना खुद का ओपिनियन लिखना है कि उस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या लगता है. That also carries 2 marks. In this you have to write of about at least 5 to 6 sentences. Okay, for 2 marks. The next comes A5. A5 is the language study. Okay, this also carries 2 marks. So as we have talked about language study, it is the non-textual grammar. That is not in the given text. Okay, so in this what is going to come is the grammar right from the parts of speech till the grammar that is there in the 12th standard course. Okay, anything from this can be asked in A5. That is 2 marks. That is for 2 marks. Okay, then next comes question number A6, that is vocabulary. Now vocabulary means, what do you mean by vocabulary? In this, questions on composition of sentences, phrases and words can be asked. You need to keep in mind questions on composition of sentences,
phrases and words are asked in vocabulary. Now, vocabulary means a set of words which are familiar within the language. So, it comprises of words which are familiar in the English language, and very easy questions are there which are asked in the vocabulary part. So, this also carries 2 marks. So, in question number 1A, 6 activities are asked of 2 marks each, and question number 1A consists of 12 marks. Okay students, so now we have discussed about question number 1A, that it carries 12 marks. Okay, so now we are going to talk about question number 1B. Okay, 2 sub questions are there. Question number 1A carrying 12 marks and question number 1B, that is language study, carrying 4 marks. Okay, so the first activity in this is B1, that is the do as directed. So this activity carries total 3 marks. ओके, सो इसमें आपको किस टाइप की एक्टिविटीज आती है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. आपको दिया हुआ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकता है, चेंज द डिग्री आपको पॉजिटिव में दिया हुआ है, आपको बोला जा सकता है कि इसको कंपैरेटिव में लिखिए सेंटेंस को. ठीक है, यू कैन बी आस्क्ड टू फिल द आर्टिकल्स ए एंड और द जो है वो आपको फिल करने के लिए भी आ सकता है. Fill in with preposition can also come. Change the tense can also come. Okay, adding the question tag, etc. can be asked in this question. Okay, do as directed में मतलब आपको जैसा बोला गया है क्वेश्चन में वैसा आपको करना है. ठीक है, and this carries 3 marks. What are asked is transformation of sentences, change the degree, fill in with articles, fill in with preposition, change the tense, add question tag, etc. In this, voice change from active to passive and change the narration, indirect to direct speech can also come. Okay, then next activity is the B2. B2 is spot the error. This consists of total 1 mark. Okay, so spot the error में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई एरर होता है. ठीक है, और वो एरर को आपको करेक्ट करके वापस से वो सेंटेंस लिखना होता है. सो दिस इज वेरी इजी एंड यू कैन स्कोर फुल 1 मार्क इन दिस क्वेश्चन. सो आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेंटेंस लिया है यहाँ पे कि दी अलार्म वर ट्रिगर्ड बिफोर. ओके, सो आपको ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक एरर है और वो एरर को सही करके नीचे आपको इस सेंटेंस को वापस से रीराइट करना होता है. तो हम सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है. तो सेंटेंस है दी अलार्म वर ट्रिगर्ड बिफोर. ओके, सो हमको इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे दी अलार्म, अलार्म की बात हो रही है. तो अलार्म कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है क्योंकि वहाँ पे एस नहीं है. ओके, और नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ हमको दिख रहा है वर. अब वर हम कब लगाते हैं, जब उसके पहले कोई प्लूरल वर्ड हो, लेकिन अलार्म क्या है, सिंगुलर. तो हमें पता चल गया है कि वर जो है यहाँ पे एरर है. तो हमें यहाँ से वर को हटा के एक अलग वर्ड डालना है जो उस सेंटेंस का जो एरर है उसको हटा दे. तो हम यहाँ लिखेंगे दी अलार्म वॉज triggered before. Okay, so we have changed the error, मतलब we have spotted the error and we have corrected it. तो हमने करेक्ट किया है, हमने पहले तो एरर स्पॉट किया कि यहाँ पे वर्ड जो है ये एरर है और हमने उसको रीराइट करके करेक्ट करके लिखा कि दी अलार्म वॉज ट्रिगर्ड बिफोर. ओके, सो हमने यहाँ पे जो एरर है हमें उसे हमेशा अंडरलाइन करके लिखना होता है ताकि वो एकदम डिस्टिंक्ट रहे कि हमने जो एरर था उसको करेक्ट करके हमने लिखा है सेंटेंस. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1A जो हमने पहले डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 1B दैट इज लैंग्वेज स्टडी जो हमने अभी डिस्कस किया है. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, that is question number 1A as well as question number 1B. So now we are moving on towards question number 2. Question number 2 has 3 sub-questions in it. Question number 2A, question number 2B and question number 2C. Okay, so what is question number 2A?
Read the extract and complete the activities. ओके आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा. सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए में एक सीन एक्सट्रैक्ट दिया था जो आपके टेक्स्ट बुक में था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ए में आपको एक अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा. Unseen means which is not in the textbook, okay, and you have never seen that extract also. तो आपको एक unseen extract दिया जाएगा जो 275 से 300 words का होगा. Okay, you will be given an unseen extract of about 275 to 300 words. और उस unseen extract पे based 6 activities रहेंगी. ठीक है, 6 activities of 2 marks each. सेम जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 ए में देखा. किस टाइप की एक्टिविटीज रहेंगी A1 से A6 कि हम पहले ही बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए में. तो जैसे ही उसमें रहेंगी वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 ए में रहेंगी. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए में सीन एक्सट्रैक्ट था और क्वेश्चन नंबर 2 ए में अनसीन एक्सट्रैक्ट. ओके, so this from A1 to A6 it carries 12 marks, 2 marks each. Okay, so question number 2b, it is summary writing and this carries 3 marks. Okay, it is a bit tough question. Many of the students find it a bit tough. So what you need to do in this is you are given 2 to 3 paragraphs. Okay, so from those 2 to 3 paragraphs you have to read that and you have to shorten them in about 120 to 150 words. Okay, you have to shorten those 2 to 3 paragraphs. You have to take out the gist of those paragraphs and present in about 120 to 150 words. And the most important thing is that you need to give the title. Title is very important as out of the 3 marks, 1 mark is for the title. Okay, अब आपको टाइटल कैसे देना है. फर्स्ट आपको जो 2 से 3 पैराग्राफ्स है उन्हें रीड करना है और फिर आपको जो समझ में आता है कि वो किस चीज से रिलेटेड वो पैराग्राफ्स है उस पे आपको टाइटल देना है. ठीक है, और वो 2 से 3 पैराग्राफ्स को आपको शॉर्टन करके 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है and compulsorily you need to give the title. Okay, next come question number 2C. This is note making और mind mapping. अगर आपको नोट मेकिंग आता है तो माइंड मैपिंग नहीं आएगा और अगर माइंड मैपिंग आता है तो नोट मेकिंग नहीं आएगा. So this also carries 3 marks. Okay, so question number 2 as a whole consists of total 18 marks. 12 marks for question number 2A, 3 for question number 2B and 3 for question number 2C as well. Okay, and the total goes to 18 marks. So in question number 2C, नोट मेकिंग में आपको क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको एक पर्सनालिटी के बारे में एक पैराग्राफ दिया होता है और आपको एक कंप्लीशन टाइप ऑफ एक्टिविटी आती है. ठीक है, आपको या तो टैबुलर फॉर्म आ सकता है, या तो पाई डायग्राम आ सकता है, या तो वेब आ सकता है. तो आपको उस पर्सनालिटी का जो पैराग्राफ है उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाना है और जैसे कंप्लीशन एक्टिविटी आती है और उसमें से वो पॉइंट्स उठा के आपको अपने टेबल या वेब जो भी आपको दिया हुआ है उसमें फिल करना है. ओके, अगर नोट मेकिंग आता है तो माइंड मैपिंग नहीं आएगा. तो माइंड मैपिंग में आपको क्या करना है, माइंड मैपिंग में आपको एक आपके माइंड में आप कैसा मैप बनाएंगे वो आपको बताना है. फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज को अचीव करने के लिए आप किस तरीके से वर्कआउट करेंगे उसका आपको माइंड मैप ड्रॉ करके प्रेजेंट करना होता है. ओके, so be very clear about question number 2 that it is divided into 3 sub questions, question number 2A, 2B and 2C, and we have done the detailed introduction of question number 2. So students, now we are going to start with another section of the question paper, that is section 2, that is the poetry section. Okay, so in this section is of poetry and appreciation. So in this section also 2 sub questions of question number 3 are there, question number 3A and question number 3B. So we are going to talk about question number 3A. So question number 3A is
read and complete. This carries 10 marks. In this आपको एक सीन पोएम दी जाएंगी जो 10 से 15 लाइन्स की होंगी. Scene poem is going to be there of at least 10 to 15 lines. This poem is going to be from your textbook. Okay, so इसमें आपको 5 एक्टिविटीज दी जाती है of 2 marks each. ठीक है, और इसमें आपको जो पोएम दी जाएंगी, जो एक्टिविटीज आपको सॉल्व करना है उसके लिए एक पोएम दी जाएंगी और जिसका आपको एप्रिसिएशन लिखना है वो दूसरी पोएम होंगी, लेकिन वो पोएम भी आपकी टेक्स्ट बुक में से ही होंगी और ये दोनों पोएम्स जो है वो अलग अलग होंगी. सो क्वेश्चन नंबर 3A इज ऑफ 10 मार्क्स और उसमें 5 एक्टिविटीज होती है. सो A1 इज सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी. सिंपल फैक्चुअल मतलब वो सिंपल फैक्ट्स पे बेस्ड है जो पोएम में जिसका आंसर हमें साफ नजर आएगा. A2 is interpretation and analysis. This is a bit important question for us. A2 interpretation और analysis. आपको एक सेंटेंस दिया जाता है पोएम में से, उसको आपको इंटरप्रेट करना होता है कि उसका रिजल्ट जो है आपको इंटरप्रेट करना होता है. तो इसमें पहले आपको सेंटेंस को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है. You have to do critical analysis, okay? Then you have to interpret the result in your own words in about 2 to 4 lines. Okay, this also carries 2 marks. Next is A3, personal response. This is again you have to write your own opinion in at least 5 to 6 lines. This also carries 2 marks. Next is A4 activity. A4 activity is the poetic device. Okay, in this which type of questions are asked are figures of speech and the rhyme scheme. Questions on figure of speech and rhyme scheme can be asked in poetic device. Okay, and the next question which is important is A5, that is creativity. Creativity ये जो है इसमें आपकी जो creativity है उसको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन डाला जाता है. In this what you need to do, you need to compose 2 to 4 lines. Okay, you need to compose 2 to 4 lines of your own. ठीक है, आपको एक पोएम जो पोएम दी जा रही है उसमें बोला जाता है कि उस पोएम की थीम को मेंटेन करते हुए आप अपनी तरफ से 2 से 4 लाइंस उसमें ऐड करिए. ठीक है, और उसकी जो राइम स्कीम है वो पोएम की राइम स्कीम जैसी ही होनी चाहिए. तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने तरफ से 2 से 4 लाइन कंपोज करना होता है. Okay, so this is the introduction of question number 3A, that is 5 activities of 2 marks each are asked and a scene poem is given to you of about 10 to 15 lines. So in the poetry section, the next sub question, that is question number 3B, is of appreciation. In this you will be given a scene extract of 10 to 15 लाइन्स. ठीक है, आपको एक सीन एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 3A में नहीं पूछा गया है, उससे दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसके भी 10 से 15 लाइन्स दिए जाएंगे. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट एज इंस्ट्रक्टेड. आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और आपको जैसा इंस्ट्रक्ट किया गया है वैसा वो एक्सट्रैक्ट को रीड करके करना है. एंड दिस कैरीज टोटल 4 मार्क्स. सो व्हाट इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन is you need to write the title of the poem. टाइटल जो है आपको एक्सट्रैक्ट में दिया नहीं रहेगा. टाइटल आपको याद होना चाहिए हर एक पोएम का. टाइटल क्या है, देन हु इज द पोएट, पोएम किसने लिखा है वो भी आपको याद होना चाहिए. देन आपसे पूछा जाता है कि आपकी फेवरेट लाइंस क्या है पोएम की. ठीक है, आपको जो भी लाइंस पसंद आती है, दिस इज अगेन अ पर्सनल रिस्पॉन्स कि आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं. देन आपको बताना होता है व्हाट इज द राइम स्कीम एंड यू हैव टू टेल द टाइप ऑफ पोएम. पोएम किस टाइप की है, फ्री वर्स है या कोई पर्टिकुलर राइम है या जो भी अलग अलग टाइप की पोएम्स होती है आपको वो बताना होता है. देन इसके बाद आपको बताना होता है कि उसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं. ठीक है, सो
This question you have already attempted in 10th standard, but while attempting it now, you will be asked to answer in an upgraded manner. Okay, you will have to present it in a more precise manner, and this comprises of 4 marks. So any points from the ones I have told you can be asked in this question. So, students, now comes the most important and the most lengthy section of the paper, that is section 3, the writing skills. Okay, so this section is the most important section of the paper and it carries a total of 16 marks. Okay, so 6 questions are there in this section, that is first summary writing, second, mind mapping. Third, statement of purpose. Fourth, note making. Fifth, drafting virtual message. Sixth comes group discussion. Okay, so all these topics are absolutely new for us and we are going to go in deep detail in the upcoming videos. So out of these 6 topics, it can be possible that some topics of standard 11th like letter writing, blog writing, email drafting can be taken. So we'll learn those topics also in the later videos. So you need to keep this in mind that much marks are allotted in this section and you can easily gain them if you remember and apply certain formats. Okay, so you need to remember this point that this section is very important and it is very important because it gains much marks and you can easily gain those marks if you remember certain formats. ओके, तो हमको ये बात भी ध्यान रखना है कि राइटिंग स्किल्स जो है हमें 12th का सिलेबस में इतना ही दिया है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि 11th के सिलेबस में से भी कोई कुछ पॉइंट्स या कुछ टॉपिक्स लिए जाए, तो वो टॉपिक्स भी हम हमारे जब हम राइटिंग स्किल्स का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे. ओके, सो यू नीड टू जस्ट कीप इन माइंड कि हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें से कोई भी 4 टॉपिक्स आपको एग्जाम में और 4 टॉपिक्स 4 मार्क्स ईच होंगे, तभी जो सेक्शन 3 है आपका वो 16 मार्क्स का होगा. ओके, सो यू नीड टू कीप इन माइंड अगेन कि सेक्शन 3 जो है राइटिंग स्किल्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So students, here we have completed section 1 prose, section 2 poetry and section 3 writing skills. So now we are moving on to the next section, which is newly introduced literary genre drama. This is also a very important aspect of this paper. I repeat, it is a very important aspect because it carries 16 marks. The new thing is that in this section, no passages are given. I repeat, no passages are given. For this, you need to have a thorough knowledge of this section. There are 4 sub-questions A, B, C and D. And each sub-question carries 4 marks. And for this, you need not worry because we will have proper preparation and briefing of each lesson in further videos. So in your course, section 4, that is genre drama, is based on novels like the history of novel, how novel originated and further on. So moving on to the question wise, sub question wise distribution. Question number 5A is complete as instructed activity. This consists of 4 marks. In this, MCQ, true or false, match the following, fill in the blanks या फिर state the correct order, ये टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं for 4 marks. Then question number 5B, answer in about 50 words, ये भी 4 marks का है. So in this you need to answer
in about 45 to 70 words also. You can, the minimum limit is 45 and maximum is 70. You need not exceed this limit. अब किस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 5B में पूछे जाएंगे, वो है डिस्क्राइब या फिर इंटरप्रेट. आपको कोई भी कैरेक्टर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, तो ये नॉवल है और उसमें मिस्टर ए नाम की एक कैरेक्टर है, तो आपको बोल रहा है कि डिस्क्राइब मिस्टर ए, तो आपको उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है इन डिटेल इन 50 वर्ड्स. या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यू विल बी गिवन अ सेंटेंस, डायलॉग, प्रोवर्ब और कोटेशन एंड यू विल बी आस्क्ड टू इंटरप्रेट इट. फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रोवर्ब दिया है, अ स्टिचिंग टाइम सेव्स 9. So, on the basis of the text which you have studied earlier, you need to interpret the result in detail in about 50 words. So, next comes question number 5C. That is also answered in about 50 words. In this, you have to discuss the theme of drama or the novel. आपको discuss करना है in detail. And you will be given a novel and you will need to justify which type of novel it is. जैसे आपको एक नॉवल दी हुई है, नॉवल का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये किस टाइप की नॉवल है, क्या ये कॉमेडी है या इसमें कुछ और एक्सप्रेशन आ रहा है, और अगर वो कॉमेडी है फॉर एग्जांपल, तो वो किस लिए कॉमेडी है, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जिससे हमें लग रहा है कि वो कॉमेडी की नॉवल है. Okay, so in this question number 5C, you need to you can get a question of discussion or justification. Then next comes the last question of your paper, question number 5D. That is also answered in 50 words. That carries 4 marks. So you can be asked some questions from the novel and you need to explain its relevance in present times. Like something is given कि it is originated from olden times. So you need to explain कि how that thing which has been originated in olden times has a relevance in present time also. So you need to explain this in very much detail. Okay, so what you need to know is that question number 5, B, C and D are the questions that you need to attempt in detail. So here we complete the detailed distribution of marks and introduction to the newly revised paper pattern of 2020-21. So keep studying and take care. Goodbye and take care.